गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं या रूल्स हैं उनको नोटिफाई करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास किया गया था, जो कि इलीगल इमिग्रेंट की जो है डेफिनेशन को अमेंड करके जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन्स या क्रिश्चियंस आए हैं, उनको सिटीज़नशिप जो है 5 साल के अंदर-अंदर देता है, जो कि पहले 11 साल का मिनिमम प्रोविज़न होता था। इवन इसमें ये भी प्रोविज़न है कि कैंसलेशन ऑफ ओसीआई रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है, अगर सिटीज़नशिप एक्ट के प्रोविज़न जो है वो वॉयलेट किए जाते हैं तो। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? कोई भी जो है ऊपर जो कम्युनिटीज़ मेंशन्ड हैं, उनका अगर कोई पर्सन जिसको कि परसिक्यूशन हो रहा है ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में, और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हैं शरण लेने, तो उनको सिटीज़नशिप देने का इसमें प्रोविज़न है। ये जो एक्ट है, 6th शेड्यूल के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, और जहाँ पर इनर लाइट परमिट लगता है जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, वहाँ पर भी ये एक्ट के प्रोविज़न्स लागू नहीं होंगे। ठीक है। अब सीएए के रूल्स को नोटिफाई क्यों नहीं किया गया था अभी तक? क्यों वेट किया गया इतना लंबे टाइम? क्योंकि कई स्टेट जैसे असम और त्रिपुरा में खासकर अपोज किया जा रहा था सीएए को। खासकर असम में, जहाँ पर ये कहा गया कि ये 1985 के असम अकॉर्ड का जो है वायलेशन है। असम के लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो है अगर सीएए के प्रोविजंस जो है अप्लाई किए जाएंगे तो जो स्टेट की डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो बांग्लादेश से हिंदूज आए थे वो वहाँ पर सेटल हो जाएंगे और उनको सिटीजनशिप के अंदर वोटिंग राइट्स वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन्स डाली गई थी कि ये लॉ जो है एंटी मुस्लिम है। इसमें इवन कई कम्युनिटीज़ जैसे कि रोहिंग्याज जो हैं म्यांमार के, तिब्बतन बुद्धिस्ट, तमिल्स, इनको एक्सक्लूड रखा गया है। अगर हम काउंटर क्लेम्स देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो अ, ये 2019 का सिटीजनशिप एक्ट है, ये रिलीजन के बेस पे नहीं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर बनाया गया है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ये लेजिस्लेशन जो है, ये कोई ओमनीबस सॉल्यूशन नहीं है कि कोई दुनिया में कहीं पर भी परसिक्यूट हो रहा है तो इंडिया उसका जो है वो ज़िम्मेदारी लेके इंडिया उसमें इसको सिटीजनशिप दे देगा। ठीक है। तो हम बस अपने आसपास में जो है कुछ कम्युनिटीज़ को ये एक सोल्यूशन दे रहे हैं कि वो इंडिया में सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो रूल्स जो हैं सीएए के, ये बताएंगे कि क्या कैसे अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए, क्या क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपने रिलीजियस परसिक्यूशन को प्रूव करने के लिए क्या एविडेंस दिए जा सकते हैं, और उसके बेसिस पर ही जो है वो फिर बेनिफिट्स आगे दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गगनयान मिशन। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम बताए हैं जो कि गगनयान मिशन में जो है लो अर्थ ऑर्बिट में फ्लाई करेंगे। ठीक है। तो गगनयान मिशन क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करने का मिशन है इसरो का, जिसमें जो है 3 मेंबर्स की क्रू जो है वो ऑर्बिट 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिन के मिशन के लिए जाएगी। एक्चुअली 4 मेंबर्स की क्रू, 4 मेंबर्स की जो है क्रू जाएगी, और LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा जो इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है। ठीक है। तो अगर हम करंट स्टेटस देखें तो इसमें दोनों ही मैन्ड और अनमैन्ड दोनों मिशंस होंगे। पहला मिशन जो गगनयान 1 होगा, जो एंड ऑफ 2024 में जाएगा, पहले तो सिर्फ टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी कि क्या टेक्नोलॉजी प्रॉपरली काम कर रही है, उसके बाद ही ह्यूमंस को बाद में भेजा जाएगा, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है। अगले मिशन में अगर हम प्रोग्रेस देखें तो फरवरी 2024 में स्पेस एजेंसी ने जो है क्रायोजेनिक इंजन जो चाहिए इस रॉकेट के लिए उसको टेस्ट कर लिया है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी तैयार है, जिसमें कि अर्थ लाइक एनवायरनमेंट दिया जाएगा क्रू को जब वो स्पेस में होंगे। क्रू के इमरजेंसी एस्केप प्रोविजन को भी जो है डेवलप कर लिया गया है। ट्रेनिंग, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रू भी जो है वो चल ही रही है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो इनकी जो एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग है रशिया के यूरी गार्गिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में करवाई गई है, और उसमें से एक एस्ट्रोनॉट जो है जो उनको नासा में भी जो है ट्रेनिंग दिलवाई गई है। और करंटली जो है ये एस्ट्रोनॉट्स इसरो के
एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने फर्स्ट पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। 130 अवार्ड्स जो हैं इसके अंदर दिए जा रहे हैं सिटीज़ और स्टेट्स को। तो पेयजल गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सिटी अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है पॉपुलेशन के बेसिस पर जो है ये स्टेट सिटीज़ को जो है डिवाइड किया गया है। पैरामीटर्स क्या हैं कि कितना एक्सेस दिया गया है, कवरेज, वाटर की क्वालिटी, ट्रीटमेंट प्लांट्स, हाउस होल्ड्स पर एक्सेस, सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर बॉडीज़, हेल्थ ऑफ वाटर बॉडीज़ और ट्रीटमेंट ऑफ यूज्ड वाटर, रीयूज़ ऑफ वाटर। ये सारे पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते ही जो है ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। एक GIS इनेबल्ड वेब पोर्टल, जियो टैगिंग भी की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग की जा रही है, उसी के बेसिस पर जो है सर्वे कंडक्ट करके ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अमृत मित्र इनिशिएटिव का भी ये पार्ट इसमें जोड़ दिया गया है। अब अमृत मित्र इनिशिएटिव क्या है? विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अर्बन वाटर सेक्टर के अंदर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व करना, ताकि वो बिलिंग, कलेक्शन, लीक डिटेक्शन, प्लम्बिंग वर्क्स, वाटर क्वालिटी सैम्पलिंग, मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक जो है वो फील्ड में विमेन पार्टिसिपेट कर सके और एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो है विमेन में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अफ्रीका क्लब। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 37th अफ्रीकन यूनियन समिट मेंबर 37th अफ्रीकन यूनियन समिट में मेंबर कंट्रीज़ ने जो है अफ्रीका क्लब इनिशिएटिव को जो है वो लॉन्च किया है। तो ये अफ्रीका क्लब क्या है? ये अफ्रीका के इन्फ्लुएंस को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो है एम्पलीफाई करने का एक इनिशिएटिव है, ताकि उनको अफ्रीका को SDGs और एजेंडा 2063 जो अफ्रीकन यूनियन का है उसके साथ मिलाया जा सके। और डेट मैनेजमेंट डिस्कशंस की जा रही हैं, और अफ्रीकन कंट्रीज़ कैसे जो हैं अफ्रीकन यूनियन के जो बॉडीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, इन सब को कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ अलाइन किया जा सके, उसके लिए ये अफ्रीका क्लब बनाया गया है। तो अफ्रीकन यूनियन है क्या? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं। ऑफ कोर्स ये 2002 में इनको लॉन्च किया गया था। अदिस अबाबा इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 72 कंट्रीज़ ने एडिशनल ऑब्लिगेशंस जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज हैं उनको लेने के लिए जो है वो हाँ कर दिया है, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज क्या है? ट्रीटी है वो WTO की, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है सर्विसेज सेक्टर का। यूरुग्वे राउंड 1995 में ही साइन किया गया था इसको भी। सभी WTO मेंबर्स इसके जो है वो मेंबर्स हैं ऑफ कोर्स। और जैसे जो GATT वो आपके गुड्स के अंदर डील करता है, ये जो है सर्विसेज सेक्टर में डील करता है, ठीक है। तो इसमें जो है जनरल ऑब्लिगेशंस, दो तरह की ऑब्लिगेशंस होती हैं इस ट्रीटी में। जनरल ऑब्लिगेशन जो सभी मेंबर्स को अलाउ होंगी, जो सभी मेंबर्स को मतलब फॉलो करनी होंगी। स्पेसिफिक कमिटमेंट जो कंट्रीज़ ने खुद बताई हैं कि वो कौन कौन से शेड्यूल जो हैं कमिटमेंट्स के फॉलो करने को तैयार हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर आती है, उन पर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर भी इसके प्रोविज़न नहीं अप्लाई होते हैं। तो अगर हम न्यू ऑब्लिगेशंस देखें तो अनइंटेंडेड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट्स जो हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर्स, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, इन सब को ईज़ करने के लिए भी जो है कुछ ऑब्लिगेशंस इसमें डाली जा रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कंफर्म किया है कि दो मून्स नेपच्यून के पास और एक मून यूरेनस के पास जो है वो पाया गया है ऑफ कोर्स, और उसको कंफर्म किया गया है, लेकिन ये मून्स अभी अननेम्ड है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है क्या? 1919 में इस्टेब्लिश किया गया इसको। फर्स्ट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ इंटरनेशनल यूनियंस हैं जो कि स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ साइंस के लिए बनाई गई हैं। एस्ट्रोनॉमी के लिए है ऑफ कोर्स ये। इंडिविजुअल मेंबर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं, जैसे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स अराउंड द वर्ल्ड। कुछ जूनियर मेंबर्स भी इसके मेंबर होते हैं। फिर इसकी मेंबरशिप जो है 92 कंट्रीज़ तक जो है वो फैली हुई है। अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की नेमिंग का काम भी करती है। जनरल असेंबली होती है इसकी हर 3 साल में, जिसमें ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं।
हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेटो जो है अपनी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज यूरोप में कर रहा है कोल्ड वॉर के स्टार्ट के एंड के बाद से। तो सबसे बड़ी उनकी एक्सरसाइज है। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज है सिंस कोल्ड वॉर एरा। और 31 मेंबर कंट्रीज़ और नाटो पार्टनर स्वीडन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 90,000 फोर्सेज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली अपने नेटो जो है ये रीजनल डिफेंस प्लान जो है इसमें शोकेस करना चाहता है। नेटो है क्या? 1949 में बनाया गया इसको वाशिंगटन ट्रीटी द्वारा। एक सिक्योरिटी अलायंस है 31 मेंबर कंट्रीज़ का, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की। इसका फंडामेंटल गोल है कि अलाइज की फ्रीडम और सिक्योरिटी को जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री मींस के थ्रू सिक्योर किया जा सके। एक सिस्टम है ये कलेक्टिव डिफेंस का। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। फंक्शंस इसके क्या हैं? नेटो जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो प्रमोट करता है, और कहने को ऑफ कोर्स और मेंबर्स को इनेबल करता है कि वो डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर जो है कोऑपरेट कर सके। नेटो जो है वो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए कमिटेड है। ऑफ कोर्स ये भी कंट्रोवर्शियल ही है, ठीक है, एटलीस्ट पेपर में तो ये बातें लिखी हुई हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लोकपाल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय मानिकराव जी जो हैं वो लोकपाल बने हैं, लोकपाल के चेयरपर्सन बने हैं। तो लोकपाल एक्चुअली एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि 2013 के एक्ट के अंडर बनाई गई ताकि एलिगेशंस ऑफ करप्शन को जो है इंक्वायर किया जा सके। लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं, मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन जो है वो या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, या कोई फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर कोई एक एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। जो टोटल 8 मेंबर्स हैं उसमें से हाफ जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, और मिनिमम जो है 50% इन मेंबर्स में से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या विमेन के होने चाहिए। मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है? चेयरपर्सन और मेंबर्स जो है वो एक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और एक जज या फिर या और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन जो है वो सब पर इसके इन्वॉल्व है, इवन प्राइम मिनिस्टर तक के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन आती है लोकपाल की। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लोकपाल जो है एलिगेशंस जो करप्शन की है वो तब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता अगर वो मैटर्स इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से रिलेटेड हों। और कंप्लेंट जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट होती हैं वो तब तक प्रोव नहीं की जा सकती जब तक लोकपाल का फुल बेंच जो है उसमें से 2/3 मेंबर्स एग्री करें कि ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो लोकपाल की पावर्स अगर हम देखें तो सुपरिटेंडेंस ओवर CBI भी मिल गई है इसको, और CBI को सर्च और सीजर ऑपरेशंस की पावर देने का काम लोकपाल के पास है। इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल जो है उनके पास भी पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। डायरेक्शंस दे सकते हैं ये लोकपाल किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स के डिस्ट्रक्शन को रोकने से, ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए। और ये जो है एनुअली जो है प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट भी देते हैं अंडर द सैड एक्ट कि क्या काम किया गया है, क्या जो है प्रोग्रेस है, और प्रेसिडेंट फिर जो है वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Citizenship Amendment Act. This topic is important for your governance section. So according to Ministry of Home Affairs, the rules for implementation of Citizenship Amendment Act are likely to be notified before the Model Code of Conduct comes into force. So what is Citizenship Amendment Act of 2019? So the act seeks to amend the definition of illegal immigrant for Hindus, Sikhs, Parsis, Buddhists, Jains and Christians who have migrated from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, and who have been living in India without documentation. So this act will grant them fast-track Indian citizenship in 5 years, which was earlier meant for 11 years. And the act also provides for cancellation of OCI registration where the OCI card holder has violated any of the provision of the Citizenship Act, okay, or any other law in force. So who is eligible for Citizenship Act provisions of 2019? So those members who were forced or compelled to seek shelter in India due to persecution on the ground of religion, they can apply for the same. The cutoff date for citizenship is 31st December 2014, and this act will not apply to areas which are covered by the Constitution
sixth schedule, and also those states where there is inner line permit regime. Okay, so why were the CAA rules not notified until now? Why so much delay of almost 5 years? So one of the primary reason was the opposition faced by CAA in several states, including Assam and Tripura, particularly in Assam, where the protesters were accusing the government of betrayal of the 1985 Assam Accord, and they are fearing that this will permanently alter the demographics of the state, because Hindus who have migrated from Bangladesh will continue to occupy the Assam region. So there were also several petitions which were challenging the CAA in Supreme Court. The petitioners were contending that this law is anti-Muslim, and apart from that, this law also leaves out persecuted Rohingyas of Myanmar, Tibetan Buddhists from China, and Tamils from Sri Lanka. Okay, but the government claimed that the basis of this law is not religion but religious discrimination. There's a difference between the two things. Okay, and apart from that, the government said that this legislation is not meant as an omnibus solution for all the issues across the world, because India is not responsible for the same. India cannot take the role of possible persecutions around the world, and we have just taken the responsibility of our neighboring nations. So these rules will notify the criteria, or how the applicants can prove their credentials and prove that they are eligible for the citizenship in our country. Okay, so they will have to also give certain proof regarding that, the fact that they were religiously persecuted in these countries, before they can get the citizenship in India. Okay, so the next topic is Gaganyaan mission. This topic is important for your science and tech section. PM Modi has announced the names of four astronauts who would be flying to low Earth orbit as part of ISRO's Gaganyaan mission. So, what is Gaganyaan mission? It is basically a mission of demonstration of human space flight capability by launching a crew of three members plus one astronaut is being trained in NASA. Okay, so that's why it is not mentioned here. So three members will be sent to an orbit of 400 kilometers for a 3 day mission. So LVM-3 rocket is being used, and it is of course India's heaviest rocket as of now. So if we look at the current status of Gaganyaan mission, so Gaganyaan mission will include both manned and unmanned missions, and the first unmanned mission, Gaganyaan 1, will go by the end of 2024. It will basically be a test flight mission to check the technology readiness for the final mission, in which the real astronauts would be sent. Recently, in February 2024 itself, the space agency performed final tests on the cryogenic engine also, which will be used for the space flight. So if we look at the systems which have been developed for this mission, we can see that the life support systems are being developed, which will provide Earth-like environment to the crew in space. Crew emergency escape provisions are also being made, so that in case of any untoward incident, the crew can safely escape from that flight. Crew management aspects for training, recovery, and rehabilitation of crew are also being evolved. The astronauts have been three astronauts have been trained at Russia's Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center. One of the four astronauts is expected to be trained at American Space Agency NASA, and currently these astronauts are undergoing training at ISRO's astronaut training facility in Bengaluru. Okay. So the next topic is Pay Jal Sarvekshan Awards. This topic is important for your governance section. So recently, Ministry of Housing and Urban Affairs has announced that the first Pay Jal Sarvekshan Awards. So these are the distinguished array of 130 awards, which will be given to cities and states. So these awards will be Pay Jal Gold, Silver, and Bronze City Awards, which will be based on the population categories. So Payjal Sarvekshan Awards would have parameters which include access, coverage, water quality of treatment plants and households, sustainability regarding health of the water bodies, availability of water flow meters, and reusing of treated used water. Okay, so a GIS enabled web portal, geotagging, and infrastructure mapping has been used for the survey upon using the data which would be
using the data which would be used for these awards. Okay, so these awards also carry the Amrut Mitra initiative, which is basically an initiative to actively involve women self-help groups in the urban water sector. And Mitras will basically be engaged in executing Amrit 2.0 projects, which would focus on billing, collection, leak detection, plumbing works, water quality sampling, maintenance of infrastructure, and the goal is, of course, to instill a sense of ownership among women. Okay, so the next topic is Africa Club. This topic is important for your international relations. So recently, at the 37th African Union Summit, member country at the 37th African Union Summit, member countries have taken the initiative of forming Africa Club. So with this Africa Club is basically an alliance of African multilateral financial institutions like the African Export Import Bank, Trade and Development Bank, African Finance Corporation, etc., so as to amplify Africa's influence in the global financial system by aligning its functions with the SDGs and the African Union's Agenda 2063. So, what is African Union? So, it's an intergovernmental organization which consists of 55 member states which make up the countries of the African continent. So, it was officially launched in 2002, and its headquarters is located in Addis Ababa, that is in Ethiopia. So the next topic is General Agreement on Trade in Services. This topic is important for your economy section. So around 72 nations have agreed to take on additional obligations in services under the General Agreement on Trade in Services. So what is the General Agreement on Trade in Services? So of course it is also part of it is a treaty of WTO, and the aim is to extend the multilateral trading system to the services sector. It was signed in the Uruguay round in 1995 itself, and all WTO members are members of GATS also, including India, of course. So there are two types of obligations under this treaty. First are the general obligations which apply to all members. Then there is specific commitment also, which are obligations which apply to only those sectors which a member country has committed to follow. So there are certain exceptions also, like the provisions of GATS do not apply to social security schemes or any other public service in which the government authority is involved. Then it is not applicable on air transport services also. So the new obligations include measures to mitigate the unintended trade restrictive effects of measures like licensing requirement procedures, qualification requirements, procedures and technical standards, among others. And the disciplines will be applied on a most favored nation principle. Okay, so these disciplines have been named service domestic regulation, and they will come into force. Then they came into force during the ongoing 13th ministerial conference of WTO. So the next topic is International Astronomical Union. This topic is important for your science and tech section. So, International Astronomical Union has recently confirmed the existence of three currently unnamed moons, one around Uranus and two around Neptune. So, what this International Astronomical Union was established in 1919 as the first of a series of international unions for advancement of specific branches of science. The mission is to promote and safeguard the science of astronomy, and the membership involves individual members who are professional astronomers from all over the world at the PhD level and beyond. This IAU also has junior members. It also consists of membership around 92 countries. It is the only organization which is recognized professionally for the naming of astronomical bodies. And IAU holds a general assembly every 3 years. Its headquarters is located in Paris, that is in France. So the next topic is Steadfast Defender 2024. This topic is important for your international relations. So NATO has recently started its largest military exercise in Europe, which is also known as Steadfast Defender 2024. It is the most extensive military exercise since the Cold War era, and it involves 90,000 forces from 31 member countries and NATO partner Sweden. The purpose of this exercise is to put NATO's new regional defense plans to the test.
And what is NATO? It was formed in 1949 with the signing of Washington Treaty. The goal is to safeguard the allies' freedom and security by political and military means. So it's a system of collective defense basically. Okay, so its headquarters is located in Brussels, that is in Belgium. So they claim to be following the democratic values, and they claim that they are committed to peaceful resolution of disputes. But of course, we have seen that these claims are merely on the paper. So the next topic is Lokpal. This topic is important for your governance section. So former Supreme Court Judge Justice Ajay Manikrao Khanvilkar ji has been recently appointed as the chairperson of Lokpal. So what is Lokpal? It is a statutory body established under the Lokpal and Lokayukt Act of 2013, and it is mandated to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for related matters. So it consists of a chairperson and a maximum of 8 members. The chairperson should either be the former Chief Justice of India, or a former judge of Supreme Court, or even an eminent jurist. Out of the total 8 members, half should be judicial members, and a minimum of 50% of the total members should be from SC, ST, OBC, minorities, and women community. So, how are these members appointed? Of course, they are appointed by the President of India on the recommendation of the Election Committee, which consists of the Prime Minister as chairperson, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Chief Justice of India or a judge nominated by him or her, and one eminent jurist. So, the jurisdiction of Lokpal include matters which require inquiry into allegations of corruption against anyone, even the Prime Minister, any cabinet minister, a member of parliament, any officials of union government under groups A, B, C, and D. Okay, so there are certain exceptions for allegations or inquiry of allegations against prime minister. Of course, Lokpal cannot inquire into allegations against the prime minister if the allegations relate to international relations, external and internal security, public order, atomic energy, and space. Also, the complaints against prime minister cannot be probed unless the full Lokpal bench considers the initiation of the inquiry and at least two-thirds of the members approve it. Okay, the powers of Lokpal include superintendence over and giving direction to the CBI, the powers to authorize CBI to search and seize operations connected to any cases of corruption. The inquiry wing of Lokpal has also been vested with the powers of a civil court. Lokpal has also been given the power to give directions to prevent the destruction of records during the any preliminary inquiry. And the Lokpal presents annual report to the President of India, which of course is laid down by the President in both houses of Parliament also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.